Dear students, this lesson is for class 12 students of CBSE, Central Board of Secondary Education. And this poem, My Mother at 66, is from the book Flamingo, alright? Composed by Kamla Das. इस पोएम को कमला दास ने कंपोज किया है, ओके? और ये फ्लैमिंगो बुक की एक पोएम है, ओके? This poem, My Mother at 66, shows human relationships. Okay? Or in other words, we can say this poem is one of the finest examples of human bonding. एक human bonding का काफ़ी अच्छा example है ये poem. Alright? कि human relationships कैसी होती हैं? Okay, you will experience that in the poem. आप poem में experience करने वाले हैं. Okay, so especially a bonding of a daughter and a mother you will experience. Okay, a bonding of a daughter and mother, एक mother और daughter के बीच में कैसा bonding होता है वो आप इसमें experience करेंगे. Okay, so it's very simple, okay, and emotional poem. It's quite emotional, and this poem also shows the harsh reality of life, which is death. ये पोएम लाइफ की जो हार्श रियलिटी है, जो एक सच्चाई है लाइफ की, उसको भी दर्शाती है. वो क्या है? विच इज डेथ. वो है डेथ, मृत्यु, मौत. एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नो वन कैन एस्केप डेथ. मौत से कोई नहीं बच सकता. सो द सेम यू विल एक्सपीरियंस हियर इन दिस पोएम, दैट द पोएट Kamla Das, she, okay, means does not want to lose her mother, and of course nobody wants. कोई भी अपनी माँ को खोना नहीं चाहता, उनसे दूर जाना नहीं चाहता. So the same you will see in this poem. So that's why I said it's quite emotional one. ये काफ़ी emotional poem है. Okay? So ये एक harsh reality को भी दर्शाती है, जिससे मैंने आपको बताया. Okay? कि मौत से कोई बच नहीं सकता. So that is the harsh reality of everyone's life. Okay? So now let's move on to the poem. Alright. So as you can see here on the board, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Okay. So this means that the poet Kamla Das once visited her parents' house in Cochin. वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है जो कि कोचिन में है. Okay. और that was the last Friday morning. वो last Friday morning थी. Okay. जब वो वापस जा रही होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. दिस मीन्स दैट शी वॉज ड्राइविंग बैक. ओके, शी वॉज ड्राइविंग बैक अलॉन्ग विद हर मदर. ओके, शी वॉज ड्राइविंग बैक मीन्स शी वॉज इन द कार. ओके, वो कार में बैठी होती है और वो वापस जा रही होती है कहाँ? टू द एयरपोर्ट. ओके, एंड देन आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. ओके, दिस मीन्स that Kamla Das, I here refers to Kamla Das. Kamla Das saw her mother beside her. Means Kamla Das was sitting, okay, next to her mother. Or in other words, we can say her mother was sitting next to Kamla Das. Okay, so that is beside. Even I have underlined this word. Beside means, in other words, also we can say alongside. Okay, even I have written here. You can see beside. That means alongside, which means next to somebody. So उसकी mother उसकी बराबर में बैठी होती है. Where? At the back of the car. कार की जो बैक सीट होती है वहाँ पे कमला दास और उसकी mother एक साथ बैठे हुए हैं. Is that okay? So that is beside here means next to her mother. So she was sitting next to her mother, or we can say her mother was sitting next to her. ठीक है, वो दोनों आस पास बैठे हुए हैं. Okay, बराबर में बैठे हुए हैं at the back seat. It means that. So now what happens? Now she observes her mother. अपनी mother को observe करती है, उन्हें देखती है. She looked at her mother. वो उनको देखती है कि उनकी क्या condition है. Because she is 66-year-old. You understand? So as you can see, this doors, open mouth, her face ashen like that of a corpse. Doors. So what she observed that her mother was dozing. उसकी mother dozing कर रही होती है. Means in other words you can say her mother was sleeping. Okay, her mother was sleeping. Okay, actually doze means here nap. Nap means, I hope you understand,
Nap means that when you feel exhausted, when you are tired, when you are physically exhausted, आप physically थके हुए हैं, आपकी बॉडी थकी हुई है, आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है, ओके, एक शॉर्ट स्लीप लेनी है, ओके। या फिर ऐसा होता है जब आप फिजिकली वीक है, फिजिकली आपके अंदर फिजिकल पावर नहीं है, फिजिकल वीकनेस है, जो कि ओल्ड एज की वजह से हो सकती है या किसी डिसीज की वजह से हो सकती है, ओके। सो द मदर वॉज इन द सेम कंडीशन, मदर सेम कंडीशन में थी, दैट शी वॉज डोजिंग, शी वॉज स्लीपिंग, ओके। सो दैट इज ऑल्सो नैप, एज आई हैव टोल्ड यू कि उसे नैप भी हम बोलते हैं। तो शी वॉज डोजिंग, शी वॉज स्लीपिंग। ओपन माउथ, open mouth means here that mother's mouth was open. मदर का जो माउथ था वो खुला हुआ था while sleeping, while dozing, यानी कि जब वो डोजिंग कर रही है, जब वो सो रही है, तो उसका उस वक्त मुंह खुला होता है, ओके। her face ashen like that of a corpse. her face means mother's face, okay. Kamala's mother's face ashen. I have underlined this word ashen, as you all can see, okay. This means pale, this means pale, even I have written here, you can see pale. Pale means आप समझते हैं, means dull, मतलब जिसमें एक चार्म ना हो, एक शाइन ना हो, ग्लिटर ना हो, चमक ना हो, जैसे कि यूथ में होती है, जब इंसान यंग होता है, ओके, अपने यंग हुड में होता है, तो उसकी स्किन में, उसके फेस पर एक काइंड ऑफ चार्म होता है, काइंड ऑफ ग्लिटर होती है। वो कमला दास की जो मदर हैं उनके फेस में नहीं है, उनका फेस एशन कर रहा है। एशन मीन्स पेल नजर आ रहा है, वो फीका नजर आ रहा है, डल नजर आ रहा है, यस। एंड लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, एज यू कैन सी दिस वर्ड कोप्स, इवन आई हैव अंडरलाइन दिस, मैंने इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है, विच मीन्स अ डेड बॉडी, ठीक है। कोप्स का मीनिंग क्या होता है? डेड बॉडी, इवन आई हैव रिटन दैट हियर, कोप्स, डेड बॉडी। सो her mother face was appearing like a dead body, वो एक डेड बॉडी की तरह लग रहा है। डेड बॉडी मीन्स आप सबने डेड बॉडी देखी होगी, ओके। सो डेड बॉडी का जो फेस होता है वो कैसा होता है? उसमें एक स्मोकी अपीयरेंस होती है, स्मोकी, यू अंडरस्टैंड, मतलब उसमें एक फीकापन होता है, उसमें एक शाइन नहीं होती, यू अंडरस्टैंड, उसमें एक लाइफ नज़र नहीं आती है, लाइफलेस होती है, क्योंकि वो तो एक, ओके, तो वो लाइफलेस होता है जो आप डेड बॉडी का फेस देखते हैं, ठीक है। तो उसका अपीयरेंस क्या होता है? स्मोकी अपीयरेंस, एज ए वाज सेइंग, ओके। स्मोकी अपीयरेंस मींस कि उसमें एक वाइटनेस होती है, वी कैन से उसमें एक फीकापन होता है, कलरलेस लगता है फेस डेड बॉडी का। तो यहाँ पे जो कमला दास है, शी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू अ कोप्स, वो उसे कोप्स से कंपेयर करती है, डेड बॉडी से कंपेयर करती है। इट मीन्स हर मदर्स फेस was appearing like a dead body, like a corpse, okay. In other words, we can say that she was also looking like a dead body, her face was looking like a dead body's face, uska face ek dead body ke face ki tarah nazar aa raha hai, okay, all right. So in other words, we can say that she was about to die. कमला दास को लगता है कि वो मरने वाली है, और she would die any moment, अब वो किसी भी टाइम मर सकती है या मर जाएगी। Is that okay? So here we can see, so this is what, okay, this is a comparison, okay. So here let's discuss the poetic device, okay, क्योंकि poetic devices का आपको knowledge होना चाहिए, वो इसलिए कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, जो एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ वो आपसे पूछ लेता है कि इस लाइन में या इस स्टैंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस अप्लाई किया गया है, यूज़ किया गया है, सो यू शुड नो दैट। सो ये कंपैरिजन है, एशन लाइक दैट ऑफ अ कोप्स, तो ये कंपैरिजन कौन सा है, ओके, और पोएटिक डिवाइस कौन सी है? दैट इज सिमिली। सिमिली आपने सुना होगा कि सिमिली इज अ पोएटिक डिवाइस। वहाँ हम क्या करते हैं? इन सिमिली टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, और उन्हें कंपेयर करने के लिए कंपैरिजिंग वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, लाइक और एज यू कैन सी हियर, लाइक इज हियर, ओके। So this is a comparing word, okay, means this word is being used to compare, okay, two objects, corpse and Kamla Das mother, dead body and Kamla Das mother। so यहाँ comparison हो रहा है,
तो जब टू ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन होता है और कंपैरिजिंग वर्ड्स यूज करते हैं लाइक और एज, तो दैट इज सिमिली। इस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, जब टू ऑब्जेक्ट्स के बीच कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरिजिंग वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं लाइक और एज, दैट इज सिमिली। इज दैट ओके? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिमिली हियर, बिकॉज poet has made comparison between, yes, Hopes and her mother Kamala Das. Is that clear? And realized with pain. Realize means she had a realization. Okay, उसे realize होता है, उसे feel होता है. Okay, और वो काफी painful feel करती है when she looked at her mother's condition, that she, yes, has become too old. Is that okay? So when she looked at her mother's condition, so she felt quite painful. उसे काफी painful feel होता है. किसे painful feel होता है? कमला दास को painful feel होता है. Is that okay? All right. So difficult words are here. You can see. Yes, as I already told you. Okay. And this is the explanation of these lines. All right. So, okay. So I hope you understand. Okay, what I have just explained to, yes, you all. All right. And rest of the poem will be explained in the next video. Okay, so till then, take care of yourselves and I'll see you shortly. Thank you so much.